is also one kind of stool. Just like the stool is generally untouchable. उसको touch नहीं करते हैं हम. It's called as impure. But the stool of the cow, that is known as cow dung, it is so purifying that people just rub it. उससे शुद्धिकरण होता है. गौ माता का जो गोबर है या गौमूत्र, उससे शुद्धिकरण होता है. So our rituals are not never they have to be rejected. They always have to be explored, and the scientific authority need to be established. And there are so many examples we can discuss. Okay, so you can show the PPT. Yeah, so here Krishna Arjuna is saying that uh, um, when the male member of the family he will die, what will happen? The rituals in this family, the family tradition will stop. क्योंकि क्या होता है कि generally family traditions को male member continue करता है ना? तो अगर इस तरह से फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप हो जाएंगे तो क्या होगा? irreligion will increase, और irreligion increase होने से क्या होगा? वुमेन बिकम पॉल्यूटेड. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताते हैं. irreligion से कैसे वुमेन पॉल्यूट होती है? क्योंकि जितनी भी हमारे रिलीजियस एक्टिविटी आप देखेंगे, रिलीजियस एक्टिविटी में वुमेन्स आर मोर एक्टिव. They show keen interest, and it takes lot of their absorption. They are much more absorbed in these ritualistic or religious activities. So these religious activities are one kind of a very positive engagement for the woman. So if the religion will increase in the society, first the first sufferer of the society will be the woman. We know, we have seen also. So therefore he is saying the woman become polluted, and from such polluted woman the progeny, the unwanted progeny will produce. Unwanted progeny, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी. Therefore our shastras talk so much about women. उनको सुरक्षा देना, they need to be cared, they need to be respected. So much our shastras do talk about women. Okay, next. So he told that by fighting, this thing will happen. The male member will be killed, religion will establish, women become polluted, and unwanted progeny will produce. So these were the few reasons that he gave. Now Sanjay told Arjuna. Arjuna, after saying all these statements, he kept his bow aside. उन्होंने अपना धनुष बाण साइड में रख दिया. And then Sanjay told. Actually संजय कौन है? संजय है व्यासदेव के ही शिष्य हैं, और संजय को आशीर्वाद था कि किस प्रकार से वो महाभारत का दर्शन कर सकते थे अपनी जगह पे बैठ के. तो धृतराष्ट्र भी महाभारत के युद्ध में नहीं गए, तो संजय बोला है टीवी में डिस्कवर किया है, उसके बाद लाइव टेलीकास्ट चालू हुआ. नहीं, उससे पहले सब बहुत पहले संजय ने लाइव टेलीकास्ट किया था महाभारत युद्ध का, लाइव फ्रॉम कुरुक्षेत्र. संजय टोल्ड एवं मुक्ता अर्जुना सांख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा. That the heart of Arjuna filled with shock, and the bow slipped from his hand. So can anyone give the reason why this happened to Arjuna? Arjuna was such a powerful fighter. Why he is showing such softness, such non-violent nature? Though he is a Kshatriya, he should be very eager to fight and kill all these people. So because all of the people who were present in the battlefield were his relative. So he didn't see the point that even after killing that many people of his relation, there was not any kind of worth kind of thing. Yeah. Anybody else would like to contribute? Why Arjuna is showing such kind of like soft, he becomes soft-hearted, non-violent, he become kind. Why? And does this type of soft heartedness suit a Kshatriya like Arjun?
No, you can. Okay, Darshan. सर अभी जो Clutches of anxiety. Okay, सर लास्ट he श्लोक में was caught आपने up जो in. बताया था सर, वो अर्जुन इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि लास्ट श्लोक में आपने बताया था कि इससे अधर्म बढ़ जाएगा और Okay. अनवांटेड हाँ, प्राणी इसलिए। लेकिन मेरा प्रश्न है कि इस तरह का जो यहाँ पे बिहेवियर अर्जुन ने दिखाया, डज इट सूट हिज पर्सनालिटी? No, sir. Ah, it does not suit his personality, है ना? Therefore, in the next chapter, Krishna is going to be very heavy with Arjuna. You can show next if there is, because next chapter will start. Yeah. So Arjuna very heavily chastised, Krishna very heavily chastised Arjuna, and he told why he should fight. So maybe tomorrow we will continue with the session. Today actually PPT didn't work properly. So today what we can do, we can take few questions. Yesterday we already had 3-4 sessions. We discussed about Bhagavad Gita, we discussed about chanting, meditation. Uh, if you have any question related to anything, whatever we discussed, or any inquisitiveness you want to have, so we can discuss for 5-10 minutes. किसी का कोई प्रश्न है तो? कोई प्रश्न नहीं किसी का? Okay, Neelam is saying how to control emotions. हम यहाँ पे भी देखते हैं कि जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन को भी एक तरह का इमोशन है विच इज ट्राइंग टू कैरी अवे हिम, है ना? अर्जुन यहाँ पे उनका हृदय द्रवित हो गया है, हाँ? और आप लोग जानते हैं कि वो सही नहीं है वास्तव में, है ना? अर्जुन शुड फाइट, है ना? बिकॉज वाई ही शुड फाइट? बिकॉज अर्जुन, बिकॉज कृष्णा वांट दैट फाइट. कृष्णा वांट टू एस्टैब्लिश धर्म. So these questions are similar: how to control our emotion, how to stop overthinking. Mm, they all are similar questions. Actually, uh, why we are sometimes carry away with the emotions? You see, हमारे दो चीजें होती हैं. Emotion is a activity of the heart, हृदय की activity है. And there is intelligence also, which discriminates, जिसका काम है discriminate करना. वो जो जो इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस है वो डिस्क्रिमिनेट करती है सही और गलत में. लेकिन जो हमारा हार्ट है, इट इज फिल्ड विद इमोशंस एंड समटाइम्स इट इज कैरिड अवे विद द इमोशंस. इट इज कैरिड अवे विद द इमोशन. समटाइम दे दीज इमोशन मे नॉट बी राइट, है ना? इसीलिए बोलते हैं कभी भी इमोशंस में आके कोई इमीडिएट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए. इमोशंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. इट कुड बी एंगर, इट कुड बी रिलेटेड टू लव, प्रेम से रिलेटेड हो सकता है. इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग. सो वन शुड नॉट टेक एनी डिसीजन व्हेन ही इज टू इमोशनल, है ना? व्हेन ही इज टू मच, व्हेन ही इज टू मच overpowered by the emotions. He should give a break, and then after some time he should, with the intelligence, he should um, act discriminately. है. So these emotions we can control through proper knowledge, through proper learning, through proper intelligence. One will able to take the right decision, not to be carried away by the emotions. Neelam, is it? Sir, please arrange the session on it. Okay, we will arrange in the future. How to stop overthinking? Again, this overthinking is the nature of the thinking is the nature of the mind. है ना? जब हमारा मन अनियंत्रित होता है, when we don't know the difference between mind and me, when we don't know the difference between the body and the soul, then what will happen? We identify ourselves with our mind, we identify ourselves with the body, and we are carried away by it.
तो हम जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वॉट एवर डिस्कशन वी आर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड टू भगवद गीता, all these things are going to cover in future. Like in our third chapter, we will no, not in third, in our sixth chapter of Bhagavad Gita, we will discuss about the nature of the mind. तो वो सेशन आप लोगों के लिए सभी के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टूडेंट मतलब क्या होता है, स्टूडेंट मतलब टू नो द डिफरेंस बिटवीन दे एंड माइंड। नहीं तो क्या होता है, उनको पता ही नहीं चलता व्हाट दे आर डूइंग इज एक्चुअली is being done through their mind, is being done by their mind, not by them, है ना? So we will discuss on Deepen about overthinking, because if our mind is controlled, just in one line, if I will say to stop overthinking, one should practice chanting Hare Krishna Mahamantra. क्योंकि क्या होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग क्या है, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट है माइंड के लिए। नॉट ओनली पॉजिटिव एंगेजमेंट है, इट्स अ प्यूरिफाइंग एंगेजमेंट फॉर द माइंड, है ना? तो अगर आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड बहुत पावरफुली आपको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, तो आप चैंटिंग को प्रैक्टिस करो। इसीलिए हमने सुबह सेशन अरेंज किया है 7:45 टू 8 AM इन द मॉर्निंग। वी हैव अरेंज दिस चैंटिंग सेशन। आप लोग उसमें आइए, और एक हफ्ते वी आर गिविंग यू 1 वीक चैलेंज। यू जस्ट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र फॉर 1 वीक 15 मिनट and you yourself will see the change in you, है ना? So this question related to overthinking emotions, and next question is from Shivani sir, how to stop regretting over a small thing. Okay, so this is a similar kind of question, like you see, हमारा माइंड जो है ना वो एक किस वो ब्लॉटिंग पेपर देखा है आपने, ब्लॉटिंग पेपर और इंक। जब आप इंक को ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर डालते हैं, एक जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, स्याही वाला जो पेन आता है, उसकी टिप को आप ब्लॉटिंग पेपर पे ऐसे छुआएंगे ना, तो व्हाट विल हैपन, दैट स्पॉट विल स्प्रेड थ्रू आउट दिस ब्लॉटिंग पेपर। सिमिलरली हमारा माइंड क्या होता है, माइंड इसी ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। उसमें कुछ भी एक चीज ऐसे गिरती है तो उसको ऐसा फैला देता है पूरा, एंड देन वी आर टोटली एनग्रॉस्ड और टोटली कंट्रोल्ड बाय दैट सिचुएशन और इमोशन, है ना? इसीलिए हम ये यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बिकॉज दीज इन व्हेन वी आर यूथ, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस वी फेस, है ना? So this reading of Bhagavad Gita, understanding spirituality, chanting Hare Krishna mantra will help you to overcome all these small issues that you are facing in your life. Yeah. Now these are very small issues. Just knowing the difference between me and my mind, we will able to overcome this problem. But for that, we need to systematically read Bhagavad Gita. Tomorrow we will read about body and soul. So tomorrow, let's see, more of clarity will be there. So to increase our memory power, okay, because nowadays we usually forget many things. Okay, this is the last question: how to increase the memory power? Actually, memory power, just like how many of you have seen that repetition or recitation help to increase our remembrance for certain things? Repetition, और जब हम लिख के याद करते हैं, या बोल बोल के याद करते हैं, तो इट हेल्प अस टू रिमेम्बर द थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम। जैसे हम लोग यहाँ पे संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, दिस इज वेरी पावरफुल। संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करने से क्या होता है, जो उसके दो एडवांटेज हैं। एक तो हमारी मेमोरी शार्प होती है, क्योंकि जस्ट वी हैव टू अटेंटिवली हियर एंड रिपीट एज इट इज। तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी जो होती है वो शार्प होती है, और दूसरा हमारी इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होती है। मेमोरी शार्प होती है और इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होती है। और हमें जनरली क्यों चीजें आजकल हम याद नहीं कर पाते, क्यों चीजें हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बहुत पुअर रहता है ना? तो चीजों को हम होल्ड नहीं कर पाते ज्यादा देर अपने दिमाग में, है? आप देखेंगे जिन चीजों को हम ज्यादा गौर से देखते हैं या सुनते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक उनका इम्पैक्ट रहता है हमारे साथ। जैसे मान लो आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी करते करते मतलब एक होता है सुपरफिशियल वे में करना कि हाँ 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 ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, एक है उसको बहुत आराम से बिल्कुल समझ के, बिल्कुल एक एक चीज जान के उसको पढ़ना। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से पढ़ता है तो वो भूलेगा नहीं जनरली,
हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसी जल्दी जल्दी पढ़ता है तो कोई उसका जो क्या बोलेंगे उसको जो होता नहीं कि एक्सपोजर जो टाइम है, एक्सपोजर जो टाइम है वो बहुत कम मिला, उसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसलिए हम भूल गए जल्दी जल्दी। तो इसीलिए जनरली क्या करते हैं लोग, लिख के याद करते हैं, लिखने से। तो लिखने से क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ना। जैसे कई बार हमारे माता पिता बोलते हैं ना, पिताजी बोलते हैं कि लिख के याद करो, लिख के लिखा करो। सो हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, दिस इज नॉट राइटिंग ऑन द कंप्यूटर एंड राइटिंग ऑन द पेपर इज नॉट सेम एट ऑल, है ना, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इसलिए आप हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठना, चैंटिंग करना, हाँ, और सुबह के समय पढ़ाई करना, क्योंकि सुबह के समय हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है बहुत ज्यादा रहता है ना, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। हाँ, इसी तरह हम जब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी लाइफ के जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाते हैं, तो जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है ना। तो इसलिए आप लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, यू कंटिन्यू विद दैट, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन मॉर्निंग सेशन 7:40 to 5 to 8 a.m. in the morning, to chant together, ठीक है। And we are sharing quiz daily, you should write quiz daily, ठीक है। And also you should invite your friends also, if you are getting benefit then please invite them also, because you all are like minded people, आप एक तरह के क्या बोलेंगे, आप सभी एक कैटेगरी के लोग हैं, तो आपका जो फ्रेंड सर्किल भी होगा वो उसी कैटेगरी का होगा। इसीलिए we request you to invite your friends also to take the benefit of these wonderful sessions। अभी हमने तो ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करी। Tomorrow is our main session because tomorrow we are going to start about body and soul, है ना। So you can join this chat WhatsApp group for morning chanting। Thank you very much those who asked question, those who joined। Thank you।